Hello, my name is Dr. Dhananjay Malankar. I am a pediatric cardiac surgeon. So, congenital heart defects are the defects in the heart which are present at birth, जिसे हम हिंदी में जन्मजात हृदय विकार ऐसा कहते हैं. So, worldwide, if we see the incidence of congenital heart defects is around 1%, जिसका मतलब है कि 100 में से जो न्यूबॉर्न्स है उनमें से एक बच्चे को कुछ ना कुछ हार्ट डिफेक्ट रहेगा. So that defect can vary from a simple septal defect like a atrial septal defect, or it could be a complex congenital heart defect like hypoplastic left heart syndrome or transposition, जिसमें हार्ट की नसें जो है वो उल्टी होती है. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अराउंड 2.5 लाख बच्चे जो है हर साल पैदा होते हैं कि जिनको हार्ट डिफेक्ट होता है. उसमें से 20% मतलब 50,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक साल में के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो नहीं बच सकते हैं. तो इसे हम क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट ऐसा कहते हैं. इफ़ वी गो बाय द स्टैटिस्टिक्स ऑफ महाराष्ट्र, देन अराउंड 40,000 20 to 25,000 newborns have congenital heart defect every year. Out of that, 4 to 5,000 children, they need pediatric heart surgery before 1 year of age, as they have critical congenital heart defect. So most common congenital heart defect is a septal defect, also known as a ventricular septal defect. In this defect there is a hole inside the heart, and it is present between the two lower chambers or the pumping chambers of the heart. So left side has higher blood pressure, whereas the right side of the heart has lower blood pressure. So if there is a defect, then the blood goes from the higher left sided chamber to the lower right sided chamber, which ultimately goes into the lungs. और ऐसे बच्चों को जो है लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाने से बार बार खांसी जुकाम होता है. They have recurrent respiratory tract infections, pneumonias, and because less amount of blood goes to the body, they don't gain weight और उनका वज़न अच्छे से नहीं बढ़ता है. तो इसे ये these are the symptoms of ventricular septal defect. On the other side, there are defects where there is a VSD or a hole in the heart, and along with that there is a blockage in the pulmonary artery. So less the impure blood of the body, instead of going to the lungs, goes back to the body again through the VSD. So इसे हिंदी में इसे हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ऐसे कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम. दिस इज़ ऑल्सो रिपेयर्ड बाय ओपन हार्ट सर्जरी. इस तरह से और भी बहुत सारे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स है, बट द गुड थिंग इज़ दैट 95 to 98% ऑफ द चिल्ड्रन विद कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स दे आर क्यूरेबल, and they can lead a normal life and of good quality. Recovery after open heart surgery is also good, and most of the children they get discharged by 4th or 5th day after surgery. Some children who are very small in weight, like 2 kilograms or less than 3 kilograms, they tend to have longer stay because of higher incidence of infection, and their organs are immature, so they may take longer duration for recovery, but overall the results in them are also good.